Good morning, friends. Today we are going to start with the practice problem on admission of partners. In previous sessions, we had started and we had completed near about three problems of company accounts. Now today, I'm going to share admission of partner practice problem, which is also very important and carrying 10 marks in board exam. So we will start with that, and afterwards we will see uh, what are the else we can practice in the next upcoming lectures. I'm sharing my screen. Admission of partner is the first situation in which we are going to see the revaluation or reconstitution of partnership form. In a reconstitution, that is the first situation. There are four situations actually of reconstitution. See, there is a balance sheet given of Makarand and Mahesh sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. You can see the problem where the ratio is provided 3 is to 2. Capital accounts we can see on the liability side Makarand and Mahesh. Then it is of amount 95,000 and 1 lakh rupees. The creditors amount is 4,000. Actually, it is a problem from your textbook, and the amounts are not written in front of that particular partner. See, Makarant's our capital is 95,000. Mahesh's capital is 1 lakh rupees. Okay, creditors amount 4,000, bills payable 3,000. On the asset side, we can see building 72,000, plant and machinery 60,000. Debtors gross debtor amount 42,000 and less RDD amount 2,000. The net amount of debtors is 40,000. You can see the bank balance, opening balance 20,000 before the reconstitution or revaluation. Then furniture amount is of rupees 10,000. Then on 1st April 2019, Mangesh is admitted. New partner Mangesh को admit कर लिया for half share in on the following terms. Half share मतलब the out of the total profit he will take 1 upon 2. Then he paid rupees 1 lakh as capital and 40,000 as his share of goodwill by RTGC. So he has given the goodwill share with the he transferred the amount by his bank account. So entry will be bank account debit to goodwill account. Okay, that we will discuss later on. Then plant and machinery revalued at 48,000. So previous amount of 60,000, now it is 48,000. So valuation of plant and machinery is reduced. And whenever asset reduce, asset should be created. And actually in the revaluation, it should be written in the debit side. So revaluation account debit to that plant and machinery account. Then building taken by Makranda 1 lakh. Building amount is 70,000 actually, and he has taken at rupees 1 lakh. So firstly appreciation is there of building amount, and then he has taken at 1 lakh rupees, that we will show in the capital account. Then RDD to be increased up to rupees 4,000. RDD जो है that 2,000, now the provision is increased. When provision is increased, where it should be treated, that we will see. और जब रिड्यूस होता है, जब कम होता है आरडीडी का प्रोविजन, दैट वी विल आल्सो डिस्कस. Then the fifth adjustment, the partners, old partners decided to retain half amount of goodwill in the business. मतलब out of 40,000 they have decided to retain the half amount. Means half amount is what, उसका half amount का क्या हुआ, that we will discuss. The old partner decided to sacrifice equally. जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल होना चाहिए. मतलब सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे बताया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म.
Let's see solution that I have provided some working notes. Old ratio is 3 is to 2. Sacrifice ratio already given 1 is to 1. So we always distribute the goodwill amount or credit the goodwill amount to the partner's capital account by the sacrifice ratio. So in old partners, we will distribute in this ratio of rupees 40,000, which is brought by the incoming partner, that is Mangesh, of rupees 40,000, and distribution of goodwill in sacrifice ratio will be Makrand. Makrand is equal to 40,000 multiplied by half, that is of 20,000. And again, Mahesh into 4 is equal to 40,000 into half is equal to 20,000. Now we can see some journal entries here. Let it be journal entries के, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक journal entry कुछ बनाई है सारी, अब देख लो. General reserve, I'm talking about this general reserve. Why it is given? Because just for information purpose that general reserve का entry जब भी होता है तो आपको ऐसा करना है. General reserve should be debited because it is a liability. If it is there, it will be shown in the liability side. So you have to give it to the give it to that account debit, so the effect of general reserve will be nullified. तो उसका क्रेडिट जो है वो डेबिट देके हम कैंसिल कर सकते हैं. ये आपको करना है बिकॉज दैट जनरल रिजर्व इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स. ये पहला पहला स्टेप है टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, टुवर्ड्स द रिवैल्यूएशन of partnership firm. So whatever the reserves are there, undistributed reserves, undistributed profits, undistributed losses are there, at the time we have to make these arrangements firstly in the old partners, and then only we will cover the other adjustment regarding capital brought by incoming partner, then goodwill adjustment, then a revaluation of assets and liabilities, and final entry is transfer of that profit, revaluation profit or revaluation loss. In some cases there might be some other entries. जैसे इस एग्जांपल में एक एंट्री होने वाला है that asset is taken over by the partner, that we will see. Okay, this type of entry you have to make of general reserve account debit to Makarand capital account to Mahesh capital account. There is no general reserve in the balance sheet actually, so I have just given for information purpose. Number 2, a bank account debit to Mangesh capital account. Mangesh is the incoming partner, new partner. He brought 1 lakh rupees. So bank account debit 1 lakh to Mangesh account 1 lakh. Next entry is that he brought rupees 40,000. He gave rupees 40,000 to the firm in the form of goodwill. So entry will be bank account debit to goodwill account, not Mangesh capital account. Mangesh को क्रिएट नहीं करेंगे because the entry as the amount of that bank account that the amount of that goodwill is received in the form of bank, and if it is also in cash, that time also we will make the entry cash account debit to goodwill account. Okay, so we will not credit that personal account, remember that. Okay, bank account debit to goodwill account, that is entry being goodwill brought by partner into the firm's bank account by RTGS facility. Okay, 40,000 it is. And next step is a distribution of that goodwill amount. So goodwill, if it is firstly created, now it should be debited. Goodwill account debit to 40,000 to Makarand capital account and to Mahesh capital. As we had discussed, distributed these this amount of goodwill in the sacrifice ratio, that is 1:1 in 20,000. So the same amounts we will credit to the Makarand and Mahesh, these two partners. So to Makarand's capital account 20,000 and to Mahesh's capital account 20,000. And finally, the narration is being goodwill raised and distributed among the old partners in sacrifice ratio. तो ये sacrifice ratio में distribute हुआ है. Okay, raised and distributed. Raise की जगह यहाँ पे most probable word distributed ही होगा, raise नहीं होगा. ठीक है, ये correction small आप कर लेना. Yes,
If it is directly, if goodwill is not brought in cash or by through the bank, that time you have to make this entry. If it is goodwill with the partner come into the business, that time you have to make just entry of goodwill account debit to old partners capital account. So that time only you can write that good being goodwill raised and distributed in the old partners in a sacrifice ratio. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में. नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री इज रिगार्डिंग टू गुडविल विड्रॉन. एक्चुअली जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, क्या कि डिस्कस करने वाले क्या कि एडजस्टमेंट में ये बताया है कि I'm showing you adjustment. See the adjustment. The old partners decided to retain half amount of goodwill in the business. Half amount जो है, ये जो 40,000 उसने लाए है, 40,000 का goodwill, that is out of that 20,000 will be written into the business and 20,000 should be what? It will be withdrawn by the old partner. So here entry we can make cash account debit, sorry, old partners capital account debit to cash account. But here one transaction we had shown with the bank, so other transaction we also show with the bank account, because for calculation purpose, for finding the balance on bank account, for that purpose only we are making this adjustment. यहाँ पे हमें कैश की जगह क्या लिखना है? बैंक लिखना है. अगर गुडविल विड्रॉन हो और आपको बैलेंस शीट में भी बैंक अकाउंट दिखाई दे, so that time you will give the credit to bank account. So entry is what? Makarand capital account debit 10,000 and Mahesh's capital account 10,000 to bank account 20,000. तो आप ये बोलेंगे सर ओके आपने 10,000 किस हिसाब से मकरंद को डेबिट किया, महेश को डेबिट किया? There is a ratio 3:2. There is also ratio 1:1. How it is given one? ये तो पता नहीं विड्रॉन कैसे किया है उन्होंने. So simple reason is behind that कि अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सैक्रिफाइस रेशियो हमने यूज किया है ऑलरेडी, at that time they have created with the goodwill amount of 20,000 and 20,000. उसके हाफ ऑफ अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं. सो दैट विल बी, यहां पे हमें रेशियो का कैलकुलेट, ओके इट विल बी ऑटोमेटिकली इन सैक्रिफाइस रेशियो ओनली, बट आपको रेशियो का यहाँ पे रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है. दैट मकरंद कैपिटल इज Makran capital is created with the goodwill amount of 20,000, so he can withdraw the half amount of rupees 20,000 only. That's why 10,000 is debited. And the same will be Mahesh's capital account debit 10,000 and the credit will be given to bank account 20,000. Come to the next. What is narration? You know, being half amount of goodwill withdrawn. Then revaluation entry started. रिवैल्यूएशन का पहला एंट्री है कि रिवैल्यूएशन यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है क्या हुआ था? कम हुआ था. ओके वी विल सी अगेन व्हाट आर द रिवैल्यूएशंस. प्लांट एंड मशीनरी 48,000, 60,000 ओरिजिनल वैल्यू था, 48,000 अभी हुआ है. दैट मीन्स द डिक्रीज इन द वैल्यूएशन ड्यूरिंग द रिवैल्यूएशन. सो एसेट को क्रेडिट देना चाहिए. ओके सो डेबिट किसे दे? रेवल्यूशन को. बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख, बिल्डिंग का अमाउंट 72,000 से 1 लाख हुआ है पहले, फिर विड्रॉन फिर टेकन हुआ है, टेकन ओवर किया है. सो वैल्यू इंक्रीज फर्स्टली, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे और डेबिट दे दो. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे दे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. आरडीडी इंक्रीज्ड, जब आरडीडी का प्रोविजन करते हैं तो आरडीडी को क्रेडिट दिया जाता है टू आरडीडी अकाउंट, बराबर है. सो अगर हमें वो बढ़ाना है, आरडीडी और इंक्रीज करना है, अगेन वी नीड टू गिव क्रेडिट ऑफ डिफरेंस अमाउंट. इंक्रीज्ड अप टू बोला है मतलब 2,000 का आरडीडी अभी हुआ है 4,000. 2,000 का आरडीडी अभी कितना हुआ है? 4,000. दैट मीन्स द डिफरेंस अमाउंट इज ₹2,000. इस एडजस्टमेंट की, इन दो एडजस्टमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है मैंने.
ये 2000 का आरडीडी ओल्ड आरडीडी था, अभी नया प्रोविजन 4000 है, प्रोविजन बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है 2000 अमाउंट से, so that the increased amount, difference amount that we will show in the transaction in the journal entry. So entry is revaluation to RDD account, and the other adjustment not related to revaluation. Let's see how to make these adjustments, how to make the entries regarding to that. तो revaluation account debit 12,000 to plant and machinery as the asset is decreased by rupees 12,000, being decrease in the value of plant. Then बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है 72,000 से 1 लाख तक बढ़ा है, सो 72,000 1 लाख माइनस 72,000, सो डिफरेंस अमाउंट इज 28,000. इतना अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो बिल्डिंग को और डेबिट दे दो, बिकॉज एसेट व्हेन एवर इट इज डेबिटेड इट इंक्रीजेस, सो हियर वी नीड टू इंक्रीज द एसेट, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 28,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. पहले इंक्रीज करो वैल्यूएशन उसका, ऐसे ही 1 लाख रुपीज से हमें उसे टेक ओवर नहीं करने देना है. सो eighth entry is Makarand capital account debit 1 lakh to building account. Now again what happened, 72,000 already in the valuation of balance sheet, मतलब उसका अकाउंट अगर बिल्डिंग का अकाउंट हम ओपन करेंगे तो ऑलरेडी वो 72,000 का ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, और डेबिट उसे कितना मिला 28,000 का. नाउ वैल्यूएशन इज 1 लाख रुपीज, नाउ इट शुड बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1 लाख. अभी उसका क्रेडिट हमें देते आएगा किसे, मकरंद को, मकरंद के कैपिटल अकाउंट को. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू मकरंद कैपिटल अकाउंट, सॉरी इट विल बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट एंड डेबिटेड टू मकरंद कैपिटल अकाउंट. इससे क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट मकरंद के डेबिट के मकरंद कैपिटल अकाउंट को डेबिट डाल के क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा. So whenever it is decreased, whenever the capital account decrease, where it should be posted, yes of course you know it should be debited to the capital account. मतलब at capital account के debit side को आपको लिखना है to building account by rupees 1 lakh in the column of Makaran. And what is the narration, being building taken over by partner. Next रिवैल्यूएशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है आरडीडी का प्रोविजन. सो व्हाट इज एंट्री एज यूजुअल, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी. व्हेनेवर आरडीडी क्रिएटेड इंक्रीज, द आरडीडी शुड बी क्रिएटेड. एंड द लास्ट एंट्री टू ट्रांसफर द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस. हाउ इट शुड बी मेड, इसका सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है. कैसे करना है, दैट आई विल शो. इसका कैलकुलेशन मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं. अगर हमारे पास ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आपको बस जर्नल एंट्री जब आपको करना है, बस आपको जर्नल एंट्री जब करना है तब आप डायरेक्टली कैसे प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कैसे करोगे, दैट आई एम गोइंग टू शो. अभी रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री जो है उसमें हमें ये बताया कि रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब रिवैल्यूएशन की कहां जाएगा, ऑब्वियसली इन द डेबिट साइड. सो 12,000 विल राइट हियर, 12,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या बताया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट जाएगा, एसेट जब इंक्रीज होता है क्रेडिट जाता है, सो 28,000 विल बी क्रेडिटेड. देन आरडीडी का ट्रांजैक्शन है, आरडीडी इंक्रीज हुआ है, आरडीडी बढ़ा है, सो दैट विल बी डेबिटेड 2,000. भी डिफरेंस अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हो. 28,000 इज द क्रेडिट अमाउंट and debit is 14,000. What is difference here? It is a 14,000. मतलब आपका क्रेडिट ज्यादा है, जब आपका क्रेडिट ज्यादा है
क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। नाउ वी नीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट this 40 these 14,000 in the old ratio only, so 14,000 divided by 5, why 5, because 3 is to 2 is the ratio, so divided by 5, 5 to the 5 to the 10, 4 is the remaining figure, then 5 eights are 40 and 2 zeros. So 2,800 per share, sorry, 2,800 per share, and 2,800 into 3 into 2 is the revaluation figures, revaluation profit figures for Mahesh and Makarand. Okay, that will be distributed in the two partners. Again, I'm sharing my screen so you can see the distribution entry. Revaluation 14,000, revaluation account debit 14,000, actually its number is the 10th, okay, 10th entry it is। तो अगर इसका बोर्ड के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो हर एंट्री को नहीं, पर एक जो इम्पोर्टेंट एंट्री है उसे 1.5 मार्क्स दिया जाएगा, सपोज टू बी इट इज अ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, देन not, it is not a 10th entry, actually general ledger को हमें करना ही नहीं है, so okay, so the important entries will be carrying weightage of 1.5, and accordingly they will be distributed, the marking system is allowed, okay। So यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखा है, 14,000 into 3/5 is equal to you got the calculation 8,400, again again 14,000 divided by 5, it is 2,800 multiplied by this 2, here it is made, and the calculation is 5,600. So distribution shown in the journal entry, revaluation account debit 14,000 to Makaran capital account 8,400, to Mahesh capital account to the 5,600. And what is narration? Being goodwill raised and distributed in the old partners in sacrifice, not in sacrifice ratio, it is wrong, in the, okay, I'll make here correction, in the old ratio, in the old ratio, okay। So that is for all today, the journal entries that we had seen importantly, and if you want to see the problem solution, okay, let it be, I will show it immediately. You can see plant and machinery debit, RDD debit, building 28,000, and the transfer of profit. Here credit 95,000, then 1 lakh is the balances, bank account credit. Why it is? Because the bank he brought the cash, he brought the capital. Then goodwill account, goodwill distribution created, revaluation profit created, debit side, withdrawn of goodwill amount 10,000 and 10,000. Building withdrawn debit in the Makaran capital account 1 lakh rupees, and the final balance is 13,400, 1 lakh 15,600, and 1 lakh rupees of Mangesh. You can see bank account, bank balance आप ऐसे find out करोगे, 20,000 ओरिजिनल बैलेंस था, 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया, 40,000 का गुडविल लाया, गुडविल विड्रॉन हुआ 10,000 और 10,000, एंड फाइनल फिगर इज ऑफ बैंक अकाउंट बैलेंस इज 1,40,000। और अभी ऐसा भी कैलकुलेशन प्लस माइनस में कर सकते हो, अकाउंट ओपन करना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, दैट इज अ वर्किंग नोट यू नीड टू डू for what, for your understanding purpose also and for getting good marks। Then you can see the capital balances on the liability side, balance sheet as on 1st April 2019, the total of capital, then new balances ASRA,
Creditors amount is 4,000 and 3,000 bills payable. It's never changed. Reserve fund था ही नहीं, general reserve था ही नहीं, distribution भी नहीं है. ओके. बिल्डिंग 72,000 ओरिजिनल वैल्यू था, इंक्रीज हुआ 28,000 से. टेक ओवर किया एक पार्टनर ने, वो मकरंद ने, 1 लाख रुपीज को. सो फिगर इज डिल इन द आउटर कॉलम. प्लांट एंड मशीनरी लेस डिक्रीज. ओरिजिनल वैल्यू था 60,000, 12,000 से डिक्रीज हुआ है. So now value is 48,000. Debtors value 42,000, less RDD 4,000. Why 4,000? Because it is increase up to rupees 2,000. And outer column 38,000. Bank balance हमने जैसा new calculation किया है, 1,40,000 here also 1,40,000. That 1,40,000 is the bank balance. And finally, furniture which is not changed in the revaluation, so 10,000 is the value of furniture. Finally, we will get the balance sheet figure, tallied figure, 2,36,000. So that is all for today. In the next lectures, we will see another situation, another practice problem, because we have completed near about all chapters. Company accounts we will focus again from tomorrow onwards. I will send you more notification regarding it, and the whatever necessary homework for it, necessary notes for it. Thank you for listening this lecture.